It's a ski resort like no other, planted in Kashmir, the fault line between two nuclear rivals, India and Pakistan. We need peace. We don't want fight. We don't want to get trouble with any country. We just want to take snowboards on shoulder, just walk on the mountain, right there, feel free. And Kashmiri women are among those feeling the freedom of the mountains. स्कीइंग अगर नहीं मुझे मिली होती मैं भी कहीं बैठ के घर पे बैठ के मतलब घर से निकलती ही नहीं कभी. Keeping these Himalayan slopes safe is a team of local patrollers trained to operate at high altitude. आज हम इंशाल्लाह ऊपर एवलांच मिटिगेशन के लिए जा रहे हैं तो हमने एक्सप्लोजिव लेके रखे. ये एक्सप्लोजिव है आप देख सकते हैं. 101 East meets the Kashmiri men and women who are transforming the slopes of Gulmarg from a conflict zone into the ultimate ski destination. It's a bright sunny morning in Gulmarg, and that means there's only one thing to do: hit the slopes. Today we're going up with one of the legends of these mountains, Raja Wasim Khan, known to his many friends as Dada. जब मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम आया तब तो मेरी फटी पड़ी थी यहाँ पे. वो बंदे मुझे सीधा सेकंड फेज लेके गए. ये स्लोप ये नहीं सही में सीधा सेकंड फेज. जब मैं वहाँ से आया ना करीबन मैं 500 बार गिरा. 100 बार नहीं 500 बार मैं गिरा. Gulmarg is one of the highest ski resorts in the world, with views of spectacular mountain peaks like Nanga Parbat in neighboring Pakistan. It's challenging, beautiful terrain, but Dada knows it better than almost anyone else. Oh, this is not mountain. This is for our family. We don't use the things like snowboard or ski. तो कोई फायदा नहीं है इस mountain का. Give us a radio. We are ready to drop. You guys can drop up. Okay, copy over. Drop. सॉफ्ट स्नो में आप जब जाते हो आप एक बादशाह की तरह जाते हो. दिमाग में ये नहीं होता है कि मुझे काम है या और कुछ करना है. तब सिर्फ यही होता है बस जीते जाओ. Dada grew up on these slopes, only a few miles from the line of control that divides bitter rivals India and Pakistan. The nations have fought 3 major wars over Kashmir, and separatists have long waged an armed rebellion against Indian-administered rule. Today, it remains one of the most militarized zones in the world. Despite Gulmarg's unique location, its spectacular backcountry ski routes are transforming it from a sleepy village to a global ski destination. Today, Dada is a sought-after snowboarding instructor here. पहाड़ पे इसको ऐसे रखना है और सबसे पहले इसको इसकी एज फंसानी है तो स्नोबोर्ड कहीं जाएगा नहीं. ठीक है चलो करते स्टार्ट. ले लो चलो. उतने सर पे बाल नहीं होंगे जितनों को सिखाया होगा. For decades, Gulmarg drew people from across the world who couldn't get enough of its fabled fresh powder trails. But the pandemic was a turning point. With India's borders closed, the resort found a new clientele: domestic tourists. ये खुद सीखना है ना. पहाड़ पे तो ये साथ नहीं होगा आपके. Take your heels up. हील्स उठानी है ऐसे टोज पे. हाँ गुड. प्रेस स्ट्रेट अप. स्ट्रेट शिफ्ट मत. इसको वापस लेके आओ ना. हाँ. This season, the resort has attracted record numbers with nearly 200,000 visitors, and its young Kashmiris who are embracing this tourism boom. ये 2019 से पहले फॉरेनर्स स्नोबोर्डिंग पता नहीं थी क्या थी. फॉरेनर्स लेके आए, हम लोगों ने सीखा. स्कीइंग फॉरेनर्स लेके आए, लेकिन जब से यहाँ के लोकल्स ने स्कीइंग स्नोबोर्डिंग स्टार्ट की, एडवेंचर शॉप्स खोले, एडवेंचर क्लब्स खोले. अब आप देखोगे
हर जगह पे आपको कश्मीरीज मिलेंगे जो लीड कर रहे हैं, जो अब कश्मीर को संभाल रहे हैं, गुलमर्ग को संभाल रहे हैं। बंदों को सिखाओगे उतने बंदे आगे हो जाएंगे। अगर मैं इस टाइम 10 बंदों को सिखाऊंगा, वो 10 बंदे आगे करीबन 20 बंदों को और सिखाएंगे, तभी ये ट्रेडिशन चलता रहेगा, तभी इसमें मज़ा है। And as more Kashmiris master the slopes, they're also joining in winter sports competitions. The first generation of professional skiers is busy training the champions of tomorrow. एक्चुअली ऑलरेडी मैं नेशनल चैंपियन रहा हूँ, तो अभी चाहता हूँ कि बच्चे को भी अभी नेशनल में पार्टिसिपेट करवाऊँ आगे। और हमें अच्छा लगता है कि नई जनरेशन यहाँ पे आ जाए और वो भी सीखे कुछ ऐसे और उनको भी लगे कि स्की अभी कितनी आगे चली गई है। 24-year-old Sabia Nabi, who lives in a nearby village, is one of Kashmir's most promising skiers. ये सारे मेरे मेडल्स हैं। बोला जब मैंने 3 कोर्सेज किए थे, वो मैंने शायद पापा की खुशी के लिए किए थे, बट उसके बाद जब मैंने पहला इवेंट खेला तो उसमें सिल्वर मिला। एंड देन उसके बाद ही 2013 में पहला नेशनल हुआ, तो मैंने पहला नेशनल खेला। उसमें जब डबल गोल्ड मेडल आया तो उस चीज़ ने मुझे बहुत एनकरेज किया और बहुत बूस्ट अप किया, तो उस वजह से मैंने कभी फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। But the journey hasn't been easy for Sabia. As one of the few female athletes in Kashmir, she faces many battles. ये मेल डोमिनेटेड स्पोर्ट है और गुलमर्ग भी मेल डोमिनेटेड है। गुलमर्ग में जितनी भी आज तक लड़कियां आई हैं उनको टिकने नहीं दिया है सीरियसली, क्योंकि सोसाइटी भी मतलब बातें होती हैं कि लोग यही कहते हैं कि पता नहीं कैसे घर से निकली हैं, कैसे घर वाले इनको इजाज़त देते हैं इस चीज़ को आगे बढ़ने में, कैसे सपोर्ट करते हैं घर वाले। मैंने बहुत टाइम सोचा कि मैं गिव अप ही कर दूंगी इस स्पोर्ट में, क्योंकि बहुत ज़्यादा हर्डल्स आई, तो लेकिन मेरी फैमिली थी जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और ये चीज़ मेरे दिमाग से निकल गया है अब कि मैं कभी इस चीज़ को अब छोड़ूंगी। For Sabia, learning to ski has given her independence and freedom. स्कीइंग जब मैं करती हूँ तब भी कोई साथ नहीं होता है, तब भी लगता है लाइक मैं हूँ और कोई है ही नहीं। मतलब ये चीज़ अगर नहीं मुझे मिली होती, स्कीइंग अगर नहीं मुझे मिली होती, मैं भी कहीं बैठ के घर पे बैठ के मतलब घर से निकलती ही नहीं कभी, और मुझे भी कोई शायद जानता ही नहीं होता आज। Gulmarg may look idyllic, but keeping these slopes safe for skiers is serious work. Members of the Gulmarg Ski Patrol start their day early, assessing the mountain for potential risks. Time was 9:50 when we go for DF. Avalanche, running and past. इसमें हमारा जिस तरह आप जानते हैं avalanche का होता है। कल हमारी हापत खोट बाउल में एक avalanche आई है human trigger. हमारा जो कि हमारे यहाँ 15 मेंबर्स हैं, तो हमें क्या क्या करना है, किसको क्या जॉब दिया जाएगा, क्योंकि अभी बहुत सारे मोर देन 200 स्कीयर्स आएंगे, तो इसलिए इस माउंटेन पे हमें रहना है, हर एक चीज़ पे नज़र रखना है, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, कोई एवलांच ना हो जाए। Triggering avalanches with explosives is one way to keep the slope safe. But given Kashmir's long history of conflict, acquiring ammunition here is no simple task. It took the ski patrol many years to convince authorities to supply them with explosives. The man entrusted with deploying them is Merajuddin Dar. आज हम इंशाल्लाह ऊपर एवलांच मिटिगेशन के लिए जा रहे हैं, तो हमने एक्सप्लोजिव लेके रखे। ये एक्सप्लोजिव है, आप देख सकते हैं। ओके, तो ये एक्सप्लोजिव लेके हम ऊपर जाएंगे, देख लेंगे कहाँ पे कोई एवलांच क्रिएट हुआ है, तो उसको डिस्ट्रॉय करके फिर इन बाउंस को सारे जो टेरेन्स हैं उनको सेव करके तो गेस्टों के लिए हम ये ओपन कर दें। The team head off to one of the highest points on the mountain. हमारे सारे बंदे तो इस एवलांच में आ चुके हैं। Dit was gehen als echt op de boer.
ये हम 2 बंदे यहाँ पे, ठीक है ना। उस वक्त हम सब कुछ भूल जाए, उस वक्त खुदा भी याद नहीं रहता है, कलिमा भी याद नहीं रहता है जब D4 या D5 एवलांच होने का खतरा होता है, क्योंकि वो पूरा पहाड़ ही आ रहा है, उस पहाड़ के साथ बर्फ जो पत्थर भी आ रहे हैं, बड़े बड़े पत्थर भी आ रहे हैं, तो बहुत ही मुश्किल है, बहुत। हम नहीं चाहते हैं कि यहाँ पर कभी D4 या D5 आ जाए। We are at the top of Mount Afarvat, more than 4,000 meters above sea level. The team has identified a potential weak layer in this area. ये तो बहुत ही डेंजरस काम, खतरनाक काम है, हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा रिस्क होती है ये तो। लेकिन हम ये रिस्क मैनेज कैसे करते हैं, हमने सीखा है कैसे, कहाँ से हम ये एक्सप्लोजिव थ्रो करेंगे, कहाँ पे जा सकते हैं। और ये गारंटी नहीं है कि हम एक्सप्लोजिव थ्रो करके बच जाएंगे, हम भी जा सकते हैं। Fortunately, the explosion did not trigger a massive avalanche. The ski patrol has now confirmed that the snow in this area is stable and safe. तो अभी हमने वो अनाउंसमेंट किया है कि अब हम ये गेस्ट रूम के लिए ओपन करते हैं, कोई खतरा नहीं है, कोई डेंजरस नहीं है एवलांच का, तो बाकी हम दिन भर यहाँ ही पेट्रोलिंग करते रहेंगे। A favorite destination for skiers and snowboarders in Gulmarg is Raja Hut, a small iconic lodge operated by Dada and his family since 1985. Dada's father, Parvez Abdul Khan, looms large over Gulmarg. When he opened the lodge, he was among the first to recognize the area's potential, despite the violent armed rebellion that was growing in Kashmir at the time. जो पापा का टाइम था वो थोड़ा टफ था, हम लोगों का टाइम है टफ नहीं है लेकिन थोड़ा डिफ़िकल्ट है। बाकी कश्मीर का हर किसी को पता ही है कश्मीर में क्या होता है, कभी कश्मीर 9 महीने भी बंद रह सकती है, महीने भी 1 साल भी, इंटरनेट नहीं है, फ़ोन नहीं चल रहे, तो उसके हिसाब से बोल रहा हूँ। Dada hopes that Kashmir is changing. We need peace. We don't want fight. If the new generation want be like good with everything, not with politicians, not with like fighting with other soldiers. So we have to follow the things. Take your ski on shoulder, not the guns. The thing I learned from my dad. Today, Dada is visiting his father, who lives a short drive away. ये हमारे परिंदे हैं इधर, किसी का नाम चिड़िया है, किसी का नाम बुलबुल है, किसी का नाम कबूतर है। अगर हम इनको कभी चावल नहीं डालेंगे ना, तो ये अंदर आकर खिड़कियों को ऐसे ऐसे करते हैं ताकि हमको चावल डाल दो। Parvez suffers from poor health and can't travel to Gulmarg as often as he'd like. But Dada still relies on his help in running their business. परमिशन चाहिए उन क्या था रिपेयरिंग खातर से परमिशन आइशन वही परमिशन जरूर है क्या ये लोग लीज इशू परमिशन आइस का ताजी लाश क्या आइस में तुम लोग क्या ऐसे गरीब लोग आइस पिंच होर खासुं आइस में हको आके साथ होर खाइस In his youth, Dada's father was part of Kashmir's armed struggle for independence. His younger brother was killed in the fighting and Parvez was arrested and imprisoned. वो मेरे घर में आए, मुझे रात के टाइम पर उठाया, बहुत टार्चर किया, हमारे साथ आओ वो करो, तो उसी हिसाब से फिर हम भी उसमें मुलवस हो गए। अगर हम मुलवस नहीं होते थे उसमें तो वो मेरा पूरा खानदान को मारते थे। उन्हीं सालों में इतना मतलब मिलिटेंट ने प्रेशर डाला हमारे घर के ऊपर, तो हमने जब सोचा कि ये मसला ये लोग मुझे भी मार देंगे, हमने यहाँ से पड़ाव किया तो हम गुलमर्ग भाग गए। गुलमर्ग एक सेफ जगह था, तो इसलिए इसके वजह से मैं गुलमर्ग में
मतलब रह गया। मेरे कुछ बच्चों ने गुलमर्ग में ही जन्म लिया कि अगर मैं मतलब बच्चों को कंट्रोल नहीं करता था, हो सकता है ये भी गया होगा किसी आग में। Just a couple of streets away, Sabia is preparing for another training trip up to Gulmarg. But she still has to check in with her father. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल? ठीक? ठीक पर असल पर शो ठीक। शुक्र शुक्र। ये मैं उस बस गुलमर्ग खसूं। वारकार असल ठीक। स्की करने का है? स्की खतर खस बस गुलमर्ग। तो वो पे नो शीन दे वो करो नो स्की। बिल्कुल ठीक, जाओ कोई भी नहीं जाओ। मेरा दुआ है आपके साथ। इम छुना शायद स्टेट चैंपियनशिप में ऐसे। स्टेट चैंपियनशिप ते मौजूद। जाओ ठीक है, इसमें क्या है, आपको जाना आपका फील्ड ही है। मेरा भरपूर सपोर्ट है हमेशा आपको हर जगह जाने का इस फील्ड में। आप इंशाल्लाह ओलंपिक तक जाओगे, मेरा दुआ है आपके साथ साथ। हर वक्त मेरा दुआ है इंशाल्लाह। अभी बाकी लेकिन ये हमेशा होता है। नॉर्मली ना पापा मुझे फोन करते मैं ऐसी रोती हूँ, ये आज ही नहीं है। इसको मैंने छोटी उम्र में, बहुत छोटी उम्र में, बिल्कुल किड्स, और इसको मैंने गुलमर्ग लिया और वहाँ स्की करने के लिए डाला। दरअसल वजह मेरा शौक बहुत था, मैं उसको बहुत ऊंचे पहाड़ों पर देखना चाहता हूँ। अभी तो ये मैं समझता हूँ अब ये स्टार्टिंग है, ये पहली लड़की होगी जब इंशाल्लाह कश्मीर से जब ओलंपिक तक जाएगी। This is the family जिसने जीरो से स्टार्ट किया है। हम पहले क्या थे, पापा ने कितनी मेहनत की और उसके बाद भाइयों ने कितनी मेहनत की। अगर हर एक फादर अपनी बेटियों को ऐसे ही सपोर्ट करेंगे तो मुझे लगता है कि लड़कियां क्या कुछ नहीं कर सकती। Back on the mountain, the ski patrol is still monitoring the slopes. Avalanche val around to those tables. Sitting right there by the dam. Myself and Double Hodge, we are right at the bottom of Shot 6 Army Ridge. Visibility is still good to the top of the chairlift, but we will go and investigate this injury. With rescues, time is of the essence, especially for skiers who have veered off the main track. Can ski anymore, Tavia, or not? I don't think so. I can't take weight on this knee. Oh, really? Okay. That might be an indication you've torn a ligament in your knee. It's a serious injury, and the team will need backup. अभी हमने इसी को एसेस करके और हमारे जो बाकी मेंबर्स की पेट्रोल मेंबर्स हैं वो आ रहे हैं कैस्केड लेके। हम इसको अब कैस्केड में पैक करके नीचे जीवन तक ले जाएंगे, वहाँ से एम्बुलेंस में हॉस्पिटल जाएंगे। सलाम। अभी पुअर विजिबिलिटी है ना, इसलिए हम उनको बुला रहे हैं कि आपको कहाँ पे पहुँचना है। तो लोकेशन इस वक्त यहाँ ढूंढना तो बहुत मुश्किल है। हाँ, पहुँच गए। In the past, the ski patrol's rescue efforts were hampered by a lack of proper training and equipment. But multiple casualties on the mountain have convinced the government here to invest in both gear and training for their staff. एक मिनट बिलाल, थोड़ा सा ये आप खा लो।
यहाँ पे रुको। तो हम क्या करेंगे, हम ये आपको ये बॉक्स स्क्रीन है यहाँ तक लगा देंगे, तो इससे कोई मज़ीद डैमेज नहीं हो जाएगा, ठीक है? कोई बात नहीं था। और बहुत सारी इंजरीज हो गई, और हमें उस वक्त बहुत मुश्किल होता था कि वहाँ बैक कंट्री में रेस्क्यू करना, क्योंकि स्लेज को लेके बैक कंट्री में जाना, वो कोई ट्रैक नहीं होता था, हेलीकॉप्टर नहीं होता था, कोई एम्बुलेंस का इंतज़ाम नहीं था। तो मुझे याद है कि हम 6-6 घंटे तक एक रेस्क्यू हम करते थे 6-6 घंटे तक। Rescuing at high altitude still has its challenges, but the ski patrol has reduced the time required for each rescue to around 30 minutes. तो फिर भी था जीवन में एम्बुलेंस तैयार, केबिन नंबर 33 विद विटनेस। जैसे इस्लाम में है, हमारे कुरान में है, खिदमत से खुदा मिलता है, और हम भी वही चाहते हैं। अगर हमें खुदा मिल जाए तो हमें सब कुछ मिल गया, ठीक है? तो जैसे बोलते हैं कि हज करने से जन्नत मिलता है, लेकिन हम ये समझते हैं कि जब हम लोगों की खिदमत करें तो हमें खुदा मिल जाए, क्योंकि जन्नत भी उसी का है ना। तो दैट्स व्हाई वी आर डूइंग दिस काइंड ऑफ जॉब एंड वी आर हैप्पी। Skiing these mountains can be exhilarating, but for Sabya, the past 2 years have been tough on her Olympic dreams. The pandemic meant that most competitions were cancelled, and training has been a lonely pursuit. हाल ये है कि ना कोचिंग है, ना ट्रेनिंग है, कुछ भी नहीं है। जो भी एथलीट है, जो भी स्कीयर है, वो खुद अपनी टेक्निक्स इम्प्रूव कर रहे हैं, वो खुद ट्रेनिंग कर रहे हैं खुद। तो ये चीज़ भी है, सोलो स्कीयर होने का ये एक डिसएडवांटेज है कि मुझे दूसरा कोई साथ होता नहीं है जो मुझे बोल पाए कि आप कहाँ ये इम्प्रूव कर रहे हैं, कहाँ नहीं कर रहे हैं। तो ये चीज़ भी प्रॉब्लम आती है मुझे वहाँ। Today, she's on her way to meet a young Kashmiri icon who she hopes can give her some advice. मेहनत करूँगी तो इंशाल्लाह ऐसे ही एक दिन मेरा भी बैनर लगेगा। 32-year-old Arif Khan was the first Kashmiri in 3 decades to qualify for the Winter Olympics. He represented India in the Beijing Games in 2022. It's kind of an inspiring moment for me, even for all of them. They're seeing their guy from their community going to be representing them at the world's highest level of sport, which is a good thing. Amazing, he's amazing. पहले फॉरेनर्स आते थे यहाँ पर, तो हम उनको देखकर लगता था कि हम ऐसी स्कीइंग पता नहीं शायद ही कभी कर सकते हैं। लेकिन अब आरिफ सर को देखकर, लाइक इन्होंने जैसे मेहनत की, उनको देखकर लाइक उन्होंने अपना गोल अचीव किया। हम अब इनको फॉलो करके अब बहुत सारे, ये एक इंस्पिरेशन बने हैं बहुत सारे एथलीट्स के लिए। सो सब इनको फॉलो करके अब अपना गोल इंशाल्लाह ज़रूर हासिल करेंगे। सबिया, कैसा हो रहा है? सच चल रहा है। प्रैक्टिस कैसे चल रही है? सच चल रही है, लेकिन प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिल रही है। लाइक नेशनल्स के लिए जाना है तो You have to have your shoulders down the slope. तभी आप मूवमेंट्स राइट लेफ्ट कर पाओगे, तभी आप प्रेशर डेवलप करोगे आउटर स्कीज पे। कि अदरवाइज अगर आप हाथ घुमाते हो, शोल्डर्स घुमाते हो कहीं और, आपके आउटर स्की का प्रेशर, you will lose it. For Sabya, Arif is both a role model and someone she hopes will become a mentor. Not just for her, but for Gulmarg's future. It's very important. It's our home game. You can see around the mountains, all around the valley, बर्फ भी हमेशा टाइम पे, slopes है, basic facilities है, और we should take it as a home game. आपकी इकोनॉमी इस पे चलती है, तो इसको लेके हम और भी डेवलप कर सकते हैं in a sports manner कि we can be medal contenders around the world. To see this resort thriving, its slopes filled with skiers from neighboring valleys, is already the realization of a dream. With Sabya, Mehraj, Dada and countless others as custodians of its destiny, Gulmarg's future could be as spectacular as its views.